Hello everyone. Today we deal with our topic Kohlraasch law. Kohlraasch law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte, that is molar conductivity at infinite dilution, is the sum of the limiting ionic conductivities of the cation and the anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. It means if we want to calculate molar conductivity at infinite dilution, it is basically the sum of limiting ionic conductivities of cation and anions, which we have to multiply with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. Mathematically, we can represent it. Let's suppose we have an electrolyte in form of AXBY. Now, molar conductivity at infinite dilution can be represented as X is the number of ions of cation, and this represent the limiting ionic conductivity of cation. Y represent here the number of ions of anion in one formula unit of electrolyte, and this represent limiting molar conductivity of anion. Right, here you can see clearly let's suppose we take another examples of another electrolyte like sodium chloride, barium chloride, aluminium sulfate. We can represent these electrolytes in terms of molar conductivity at infinite dilution is just equal to the molar conductivity of sodium cation at infinite dilution plus molar conductivity of chloride ion at infinite dilution. Now in case of barium chloride, you can see clearly in barium chloride there are two chlorine atoms, so we have to just multiply with the number 2 when we represent or calculate the molar conductivity of barium chloride at infinite dilution. In case of aluminium sulfate, you can clearly see here there are 2 aluminium atoms and 3 sulfate ions. So Kohlraasch law, according in this case, we can represent here twice the molar ionic conductivity of aluminium plus 3 ion plus 3 times the molar conductivity of sulfate ion at infinite dilution. Right, now Kohlraasch concluded that each ion makes a definite contribution to the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, irrespective of the nature of the other ion of the electrolyte. It means Kohlraasch हमें ये बताता है कि जो एक आयन प्रेजेंट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो आयन जब डिसोशिएट होता है, अगर हम क्या करते हैं टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो उस आयन का कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है. उससे हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आयन किसके साथ या उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई दूसरा आयन उसके साथ प्रेजेंट है या नहीं है. लेट सपोज हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड है. अगर हम बात करते हैं सोडियम की आयन की जो कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, टोटल मोलर कंडक्टिविटी में, तो सोडियम किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो फ्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो आयोडाइड के साथ जुड़ा है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा मोलर कंडक्टिविटी में जब हम इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, तो वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा. आगे, दिस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी. जो आयन का कंट्रीब्यूशन होता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं. अब हम बात करते हैं, कोलराश ने मोलर कंडक्टिविटी को तो एक्सप्लेन किया है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. आल्सो इट कैन एक्सप्लेन अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज. He say that the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of two values, one depending upon the cation and the other depending upon the anion. Right? It can be represented as equivalent conductivity of electrolyte at infinite dilution is equal to equivalent conductivity of cation at
infinite dilution plus equivalent conductivity of anion at infinite dilution. Here you can see clearly this represent equivalent conductivity of electrolyte at infinite dilution. This represent limiting ionic conductivity of cation. This represent limiting ionic conductivity of anion. In question molar conductivity at infinite dilution of cation and anions are provided. अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, मोलर कंडक्टिविटीज मिलती हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी कैटायन की किसी भी एनायन की. तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को लिटिल बिट चेंज कर देते हैं. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 1 by n plus. What is n plus? N plus is the charge present on cation into molar conductivity of cation at infinite dilution plus 1 by n minus is the charge represent on anion into molar conductivity at infinite dilution of anion. Simply by taking these examples we can understand clearly. In case of sodium chloride we can calculate equivalent conductivity of sodium chloride is equal to molar conductivity of sodium ion plus molar conductivity of chloride ion at infinite dilution. You can see clearly in case of sodium it has one charge and in case of chlorine it has one charge, so there is no need to put down 1 by 1 here. But in case of barium chloride you can see clearly barium ion has plus 2 charge, so we can write here 1 by 2 according to this formula, and chloride ion has 1 charge, so basically 1 by 1 is no need to write here. In case of aluminium chloride, here you can see aluminium ion has plus 3 charge, so we can write here 1 by 3, and chloride ion has 1 charge, so 1 by 1 there is no need to write here. And in case of aluminium sulfate you can see clearly aluminium has plus 3 charge, so we write 1 by 3 molar conductivity of aluminium plus 3 ion plus 1 by 2 for sulfate ion because it has 2 charge, 1 by 2 into molar conductivity of sulfate ion at infinite dilution. Now this is the part of representing equivalent conductivities, and we studied about the molar conductivities according to the Kohlraasch law. Now there are some applications also, and we have to discuss one by one. First application, calculation of degree of dissociation. According to Arrhenius theory of electrolytic dissociation, the increase in the molar conductivity with dilution is due to increase in dissociation of the electrolyte. अगर हम एरेनियस थ्योरी की बात करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन से रिगार्डिंग है, तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी वैल्यू होगी मोलर कंडक्टिविटी की वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है. क्यों बढ़ती है? क्योंकि इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टेक प्लेस. किस वजह से? क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो डिसोसिएशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो बढ़ जाती है. The molar conductivity at infinite dilution becomes maximum because the dissociation is complete. अगर हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर देखते तो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्या मिलती है? सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उस टाइम पे क्या हो चुकी है, डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुकी है. सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो छोटे छोटे आयंस में टूट चुके हैं. तो हम अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी of electrolyte at particular concentration divided by molar conductivity of electrolyte at infinite dilution. By using this formula we can calculate degree of dissociation. This formula is very much important for the numerical perspective also. Now second application, calculation of dissociation constant of a weak electrolyte. We can use Kohlraasch law, and all this is a part of application of Kohlraasch law. By using this we can calculate dissociation constant also. Let's suppose we have a weak electrolyte acetic acid which partially dissociated into acetate ion and hydrogen ion. At time C, C is the concentration of acetic acid and 0 represent that the reaction is not yet started. But as the time t reached, that is equilibrium time reached, we can see
there is a formation of acetate ion and H plus ions according C alpha, and which is dissociated from C. So we can write at time t concentration becomes C minus C alpha for acetic acid, and for acetate ion C alpha, and for hydrogen ion C alpha. We can write down K according to law of mass action, which is equal to the write down concentration of the product by concentration of the reactant rates to its power numerical coefficient. Here numerical coefficients are 1 and 1, so no need to write here. By just putting down these values, acetate ions value C alpha we write here, hydrogen ion value C alpha we write here, and acetic acid value C minus C alpha at the time of equilibrium we write here. By solving these, we can get the dissociation constant value is equal to C alpha square 1 minus alpha, and alpha can be calculated in application first. We can see clearly alpha is equal to the molar conductivity of electrolyte at particular concentration by molar conductivity of electrolyte at infinite dilution. Now application third, calculation of solubility of sparingly soluble salts. What are sparingly soluble salts? Those salts which dissolve to very small extent in a water are called sparingly soluble salts. ऐसे कुछ salts हैं हमारे पास नेचर में, जैसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, बेरियम सल्फेट की, लेड सल्फेट की, अगर उनको हम क्या करते हैं पानी जो कि सॉल्वेंट है हमारा उसके अंदर उनको डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट वेरी वेरी लेस अमाउंट में उनके अंदर क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं। ऐसे साल्ट्स को हम क्या बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स बोलते हैं। As they dissolve very little, their solutions are considered as infinitely dilute. क्योंकि वो थोड़ी ही अमाउंट में बहुत ही कम अमाउंट में क्या होते हैं डिसोल्व होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं सोल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं। As we know, molar conductivity at infinite dilution is equal to kappa into 1000 by m. M represent here molarity. मोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी आर रिलेटेड। जो हमारे पास मोलैरिटी है और सोल्युबिलिटी है क्या है वो आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? अगर हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है सैचुरेटेड है। कैसा है सॉल्यूशन सैचुरेटेड। देन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी। तो हम कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोल्युबिलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि मोलैरिटी एक जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास उसको इक्वेट करके क्या बोल सकते हैं हम सोल्युबिलिटी बोल सकते हैं। बाय अब हम क्या कर सकते हैं यहां से सोल्युबिलिटी को इधर भेज सकते हैं और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को यहां लेके आ सकते हैं। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं सोल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किनकी स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन की। फोर्थ एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। We can use Kohlraasch law to find out the ionic product of water. As we know clearly, the ionic conductivities of hydrogen ion are 349.5 Siemens centimeter square mole inverse. These values are given, and molar conductivity of hydroxyl ion is at infinite dilution is 198.5 Siemens centimeter square mole inverse. By using Kohlraasch law, we can get molar conductivity of water at infinite dilution by just simply adding the molar conductivity of ions. We can get down this value, and by applying formula we can calculate the molar conductivity of water at infinite dilution, that is equal to kappa into 1000 by m. Kappa represent here specific conductivity, m represent here molarity, and the value of kappa is given 5.5 into 10 की power minus 8 Siemens centimeter inverse. By using this we can calculate molarity, and we know ionic product of water is equal to the multiply of hydroxyl ion into hydrogen ion concentration, and we can get here concentration of hydrogen ion is 1.0 into 10 की power minus 7. We can just write down put down these values here, and we can calculate the ionic product of water. Now fifth application, most important application, calculation of molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte. अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोलराश है वो आया किस लिए था, वो किसके लिए आया था मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। लेट सपोज हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, उसकी हमें क्या करनी है मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो हम क्या करते हैं कोलराश लगाते हैं उसके ऊपर। कोलराश लगाते ही क्या होगा हमारे पास जो कि सम होगा क्या
जो हमारे पास कैटायन और एनायन होंगे किसके अंदर, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अगर उनकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज का सम कर देते हैं हम इनफिनिट डाइल्यूशन पे, तो हमें क्या मिल जाती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड हमें मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अब इन वैल्यू को हम ऐसा तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, अनदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट सपोज आई हैव टेक NaCl and another electron and apply Kohlrausch law. Then by applying Kohlrausch law, we can get this equation. This is equal to molar conductivity of sodium chloride at infinite dilution is equal to molar conductivity of sodium ion at infinite dilution plus molar conductivity of chloride ion at infinite dilution. And we put down this equation as second. Then we take another electrolyte HCl and applying Kohlrausch law again here. And we take another electrolyte sodium acetate and apply Kohlrausch law here. By getting these four equations, we can just add equation third and fourth. By adding these two equations, third and fourth, we can get down the value of molar ionic conductivity of acetate and molar ionic conductivity of hydrogen ion. But these two terms are extra here, so we have to remove them by just subtract equation second from fifth. Like here you can see clearly, we can cancel out molar ionic conductivity of chloride ion with molar ionic conductivity of a chloride ion and sodium with sodium, and we just get down the values of 2, which is equal to the molar ionic conductivity of acetic acid. By using these, we can calculate the molar ionic conductivity of acetic acid at infinite dilution. In exam, we have given these values and we just have to add and subtract according to the equation. And this is very much important question regarding board perspective view and competition perspective view. Now we have to deal with some numericals, and you can saw them clearly one by one, and these numericals are here. Numericals based on conductance, specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. We discuss here one by one. First question, if a specific conductivity of N by 50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 ohm inverse centimeter inverse and resistance of a cell containing this solution is 100 ohm, calculate the cell constant. First of all, we have to solve question accordingly by write down the given values. Here specific conductivity represent by letter kappa, and kappa value is 0.02765 ohm inverse centimeter inverse. हम यूनिट देख के भी पता कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे के रखा है, क्योंकि जो हमारे पास कापा होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 100 ओम्स दिया है। अब वो निकलवाना क्या चाहता है, वो निकलवाना चाहता है सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, kappa is equal to G into G star, where kappa is specific conductivity, G is your conductance and G star is your cell constant. And G is equal to 1 by R. By writing putting down these values, we can modify formula. G star is equal to K by G and G is 1 by R. So then G is equal to 1 by R put, then kappa into resistance gives the value of a cell constant. We can easily solve out and get down the value 0.2765 centimeter inverse. Actually the units of cell constant are centimeter inverse. G star we can say is L by A, and length are in centimeter, area in centimeter square. So unit of G star is centimeter inverse. So this answer and units are correct. Now second question. Specific conductivity of a 0.12 normal solution of an electrolyte is 0.024 ohm inverse centimeter inverse. It means it is specific conductivity. Determine its equivalent conductivity. It is just simple question. By putting down formula we can get easily our answer.
equivalent conductivity of an electrolyte is equal to kappa into 1000 by n, and we have get both values, that normality is here 0.12 and kappa value is here 0.024 ohm inverse centimeter inverse, and we can just get down the answer. Now question number 3rd. The resistance of a decinormal of an electrolyte in a conductivity cell was found to be 245 ohm. It means it is the value of resistance. Calculate the equivalent conductivity of the solution if electrodes in the cell were 2 cm apart and each has an area of 3.5 cm square. And this one is length and this one is area of cross section. So first of all we have to find kappa, because for calculation of equivalent conductivity it is need of specific conductivity, right? By writing down this formula, kappa is equal to conductance into length by area, and conductance is equal to the 1 by resistance. By writing down these values we can calculate kappa, that is specific conductivity. And from question, decinormal means 0.1 normal is equal to decinormal, and equivalent conductivity is equal to kappa into 1000 by n. We can get value of n here 0.1 and kappa value from here, and just solving down we can get value of equivalent conductivity of an electrolyte, that is equal to 23.32 ohm inverse centimeter square gram per equivalent. Right. Now question number 4th. The conductivity of 0.01 molar solution of acetic acid at 298 Kelvin is 1.65 into 10 to the power minus 4 Siemens centimeter inverse. In question, we have given down conductivity value, we have molarity value. Simple question, calculate molar conductivity of the solution, which is equal to kappa into 1000 by m. Just putting down this value and we can solve it clearly. It is 1 mark question. You can easily, this is formula based question. Now question number 5th. The measured resistance of a conductance cell containing 7.5 into 10 to the power minus 3 molar. This is concentration molarity of the solution of KCl at 25 degrees Celsius was 1005 ohm. This one is resistance. Calculate specific conductance. Molar conductance if cell constant is 1.25 centimeter inverse. फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बोथ आर सेम. अगर पेपर में आपको क्या बोलता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है या कंडक्टिविटी निकालना है, तो दोनों ही क्या है, एक बात है. और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, कापा इज इक्वल टू, अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये यहाँ हमारे पास है G इंटू जी स्टार. ये भी क्या है हमारा पास 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है. रिलेशन क्या होता है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस का क्या रिलेशन होता है, कापा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार. और G क्या होता है हमारे पास 1/r. right, by putting down these value we can solve specific conductivity, and molar conductivity is equal to kappa into 1000 by m. and putting down these specific conductivity value here, and कापा की वैल्यू हमें मिल जाएगी. यहाँ से हमने सोल्व कर लिया है. मोलैरिटी क्या है हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3. वैल्यू हम पुट करेंगे और क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को डिटरमाइन कर सकते हैं. ये बात हमें ध्यान रखने की, हमें यूनिट्स जरूर लिखनी है, अदरवाइज क्या होता है हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. फॉर्मूले लिखने के भी आपका हाफ मार्क्स होता है, और यूनिट्स जो आप लिखते हैं लास्ट में आंसर में उसके भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं. अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो हाफ मार्क्स आपका क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. This is the value of conductivity. Calculate is molar conductivity. This is formula based question and this is NCERT question also. Simple question है, हम इसको कर सकते हैं just putting down the values. Now question number 7th. The resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. यानी कि रेजिस्टेंस गिवन है हमें, कंसंट्रेशन गिवन है. व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, क्या निकलवा रहा है वो हमसे, सेल कांस्टेंट निकलवा रहा है उसी सेल का 0.001 मोलर KCl at 298 Kelvin is 0.146 into 10 की पावर माइनस 3 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. इसका मतलब ये क्या दे रखा है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स हमें कंडक्टिविटी दे रखा है. बाय नोट डाउन द गिवन वैल्यूज वी कैन जस्ट find out the relation. Conductivity is equal to conductance into cell constant, and conductance is equal to the reciprocal of resistance. By putting down these value we can just simply solve down and find out the value 0.219 centimeter inverse,
and we also know Siemann is equal to 1 by ohm, or we can say ohm inverse is equals to Siemann, or ohm inverse is equals to Mho also. Right, now question number 8th. Conductivity of 0.0024 molar acetic acid is 7.896 into 10 की पावर -5 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये क्या हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है. बाय जस्ट seeing the unit we can easily conclude what are given in the question. Calculate molar conductivity. If molar conductivity at infinite dilution of acetic acid is 390.5 centimeter square Simon mole inverse, यहाँ क्या आएगा मोल इनवर्स. व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. ये क्वेश्चन आपका क्या है, बोर्ड में भी आया हुआ है और रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सोच समझ के अटेम्प्ट करने चाहिए. हमारे पास क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है कापा इंटू 1000/m. दोनों चीजें गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. देन वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा. अल्फा इज कैलकुलेटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. और ये क्या हमारे पास एप्लीकेशन भी थी, फर्स्ट एप्लीकेशन कोलरास लॉ की. क्या होती है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी of a electrolyte at particular concentration by molar conductivity of electrolyte at infinite dilution. Molar conductivity at particular concentration we have calculated by this formula, and molar conductivity at infinite dilution in question we have given 390.5 centimeter square Siemann mole inverse. By this we can calculate alpha, and we also know clearly dissociation constant is equal to C alpha square by 1 minus alpha. By putting down these value, alpha from here 8.4 into 10 की power -2 का square, and C from question we have given 0.0241. This is the concentration. By putting down these value we can calculate dissociation constant for the acetic acid at that particular concentration. Right, now question number 9th. Suggest a way to determine the molar conductivity of water at infinite dilution. We know molar conductivity of water at infinite dilution is equal to molar ionic conductivity of hydrogen ion plus molar conductivity of hydroxyl ion at infinite dilution by applying Kohlraasch law. But we have to take another electrolyte also, like HCl, like NaOH, and writing down these according to Kohlraasch law. Why we have selected these both two? Because logic is to get the molar ionic conductivity of hydrogen ion and molar ionic conductivity of hydroxyl ion at infinite dilution, and we have to remove these two molar ionic conductivities. So we have to take another electrolyte like NaCl, and by just adding equation first and second and then subtract equation third, we can just get down the value of molar ionic conductivity of hydroxyl ion and molar ionic conductivity of hydrogen ion is equal to the molar conductivity of water at infinite dilution. By these equation, if we get values, we can solve and calculate the value of molar conductivity at infinite dilution for water. Now question number 10th. The molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 Siemens centimeter square mole inverse. Calculates its degree of dissociation and dissociation constant given. Molar ionic conductivity of hydrogen ion at infinite dilution is 349.6, and molar ionic conductivity of formate ion at infinite dilution is 54.6 Siemens centimeter square. First of all हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है मिथेनोइक एसिड की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो किसके इक्वल होती है, सम होती है मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज के उसके आयंस का. हम कैलकुलेट कर लेंगे. देन हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन गिवन है 46.1. तो अब क्या है, एप्लीकेशन लगाएंगे हम कोलराश लॉ की, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि इसके इक्वल होता है मोलर कंडक्टिविटी of electrolyte at particular concentration by molar conductivity of electrolyte at infinite dilution. We can calculate alpha here clearly. You can see units are cancelled down. Then we have to calculate dissociation constant, which is equal to the, in last question we have also done
C alpha square by 1 minus alpha, and alpha value we have calculated here, and C value in question we have given 0.025, and we calculate 3.67 into 10 की power minus 4 the dissociation constant value. This one question is also repeated in board exam and very much important. Now question number 11. If molar conductivity at infinite dilution of NaCl, HCl and sodium acetate are 126.4, 425.9 and 91 Siemens centimeter square mole inverse respectively, what will be the molar conductivity of acetic acid at infinite dilution? First of all, we can use Kohlraasch law, and this one is our fifth application. By applying these according to Kohlraasch law, we can split up into ions, which is just equal to the sum of molar ionic conductivities of its ion. And for applying sodium chloride and then HCl, then we have to solve these three equations according to how we can get the value of acetic acid at infinite dilution. If we add equation third and equation second and then subtract equation 1, we can just get down the molar ionic conductivity of hydrogen ion at infinite dilution and molar ionic conductivity of acetate ion at infinite dilution. And these values are given in our question, that is molar conductivity of hydrogen chloride at infinite dilution is 425.9 in question we have given, and molar conductivity of sodium acetate at infinite dilution is 91 in question we have given, and for sodium chloride 126.4 in question we have given. By just solving this, we can get down the molar conductivity of acetic acid at infinite dilution. These are some numericals which we have discussed here, and next you have to also prepare some of the numericals by yourself from other books like GRB publication or Modern ABC and solve them. After solving them, you can just clear your concepts. और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो गैल्वेनिक सेल्स से रिलेटेड होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड होगी, और उसके ऊपर हम आप आगे काम करेंगे. जितना भी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शंस था वो मैंने अभी उठा लिया है आपका, कंडक्टेंस से रिलेटेड, मोलर कंडक्टिविटी से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से, कोलराज से रिलेटेड और फैराडे लॉ से भी रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ काफ़ी हद तक देखे हैं. अब आगे हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Like and subscribe the channel.